Research Institution. Award for recognition, gold medalist, Allahabad University at MSc AG for first class first, Vigyan Bachaspati Award of Allahabad for popularization of science, Rishi Award for SFED Varanasi IFCO research work, Satabdi Award for popularization of science, extension services, All India Radio regular talker, regular expertise to TV for farmers program, several broadcasted serials program written by Professor Tiwari, मिट्टी की कहानी मिट्टी की जुबानी हिंदी एपिसोड 11 एपिसोड फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो जानिए पहचानिए सवारिए मिट्टी हिंदी 11 एपिसोड फ्रॉम ऑल इंडिया रेडियो खुली आंखें देखी हरियाली हिंदी एक और मिट्टी हरित क्रांति हिंदी एक्टिव इन फार्मर्स एडवाइजरी सर्विसेज. So these are the brief biodata. He is a very good communicator. Even he can speak in Awadhi, Bhojpuri, English and Hindi. And he is very liked by the farmers. When he give the speech in the any Kisan Goshti, farmers, there is a pin drop of silence. So he is a very good communicator, very effective communicator. I will request Professor Tiwari to deliver his talk. Before this, I will request our Honorable Vice Chancellor, since he is very busy and there are a lot of meetings and everything, so he has to go. I will request Honorable Vice Chancellor to present bouquet, to present this memento to Professor R.C. Tiwari. Learned Vice Chancellor, Advisor to the Chancellor Gupta ji, my scientist colleagues which were sitting on the dais, faculty members of this university, and dear students. At the outset, let me extend my heartfelt gratitude to the Management Committee, to the Organizing Committee, our Vice Chancellor, the Dean, School of Agriculture, for inviting me to discuss some of the experiences with our younger generation with an aim that what we have experienced in 45 years of agricultural education and agricultural situation in India, what is to be done. And I congratulate the authorities here who have selected this topic. Now this is hue and cry on this in the whole world. So again I congratulate for this topic which you have chosen, but I want the attention of the students. हम कहा करते हैं हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के. You will say why. The question why you were reciting this couplet. I would like to give the agricultural situation of the 1950s when our constitution came in existence. In India, the population was 36 crores. Total food production was 5 crore tons. Average age of the per person of India, average age was 36 years. And you might have read or heard the famine of West Bengal of 41, 42, nearly 20 to 30 lakhs people died because of hunger. Soil is the same, climate is the same, everything is the same. But what happened? हम लाए हैं निकाल के कश्ती तूफान से. Now the population is more than 121 crore. Average age per person is around 65. And the whole food production from 5 crore tons last year, which was a record of
22.58 crore tons, if I'm not forgetting. So, for this whole situation, who did it? Definitely our beloved farmers, their labor, definitely the scientific mind of our agriculture people, agricultural scientists, and no doubt the government's willpower. Now, the reason is that there are a lot of ifs and buts being raised regarding this green revolution. इसके पहले कि आपसे कुछ बात करें, अगर आप लोग हमें माफ़ी दें, तो मैं जानना चाहूँगा कितने लोग चाहेंगे हमारे छात्र कि हम अंग्रेजी में ही पूरा लेक्चर दें। हाथ उठाइए जरा, कोई बिना किसी दिक्कत के, जरा हमें बताइए कितने लोग हैं। इंग्लिश में अगर हो तो क्या हो? सबको एक्सेप्टेड है? हाथ ही नहीं उठ रहा है तो हम कैसे माने कि एक्सेप्टेड है? कितने लोग चाहते हैं कि हम डेलिबरेशन इंग्लिश में दें और एक्सप्लेन हिंदी में करें? चलिए, तो ऐसी समस्या है कि भारत की हर भाषाओं में तो बोलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये पक्की बात है कि मैं दोनों ही में कोशिश करता हूँ that things are clear to you. It's not very hard approach which I am going to give you. Simple things I am going to just narrate to you what is to be done and what is the situation at the moment. Next please, change it. Who is to change it? Friends, we are living in two worlds. One is the world, natural world which we have inherited, in which we have soil, water, air and everything. And the other world which we have created, the world of development. Development, economical, political and social. Now here I wanted to pointer, nahi rakh sabka. Here I wanted to just show you that if you see that this whole world is dependent on this, nothing else is there. This is to be exploited for this, and this thick arrow indicates that it is going unilateral, and if you take this, this is all broken. Nobody bothers about the regeneration of the natural resources which are responsible for the developmental world. Now this is one point which is to be taken care of, and the soil, atmosphere, everything comes in the whole system that we are exploiting. We are not never bothering about their management and regeneration. Next please. Next. See the overall situation. I'm not going to just read it. You can read faster than what I will speak. Overall, we have 2.3% of the geographical area of the world, on which we have 16 to 17, between 16 to 17 world population, and almost the same population of the animals. And the same is the situation with water. We have only 4.5% of the fresh water of the whole world with us, and 80% of the water which is available to us, fresh water, is for irrigation or agricultural purposes. So going to that, if you see this whole situation, here again I have taken the problem of the language. We have around 59 agricultural universities at the moment on the basis of the language problem. If I train a MSc AG in soil science here in Varanasi or in Gwalior, and if he is posted in Tamil Nadu, he has to go for 6 months training of the language. Only then he can go to the village and do it. It's not a thumb rule which can be applied, although research can be applied. But हमारे गांव में कहावत है, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी. यानी कोस means 2 miles. There is a lot of change within 8 miles, even the language and the water. Water means the soil change. As our learned Vice Chancellor said, it is not only giving the food. There are 6 functions of the soil. 6. खाना देगा, पानी देगी, यही ट्रेजर देगी, यही आपको खेल का मैदान और घर बनाएगी. आप इतने जीन्स इसमें भरे पड़े हैं, कभी पता ही नहीं कितने जीन्स इसमें है, कब हमारे काम आएंगे. इसीलिए आवर अथर्ववेद से माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वीया, हमारे डॉक्टर गुप्ता साहब ने इसको नरेट किया. और हमारे यहाँ हर शादी और विवाह के पहले पूजा माटी की होती है, माटी पूजा. So many things have to be narrated, but I am just giving you
Now America is giving a slogan through Voice of America, save the soil, its true owner is not Edmond, this is Mother Earth. हमारा वेद तो बहुत पहले कहा गया, हजारों साल पहले, माता भूमि पुत्रो हम पृथ्विया, clear cut. So, if you see the situation, it is not very easy to manage the soil. It is to be with the farmers that will have to educate from new and corner every part of the soil, which we have not done. Next, please. Now, this just I wanted to tell you that we are going to face challenges in this century. This is for you. इसलिए मैंने कहा इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ये प्रॉब्लम आप फेस करने जा रहे हैं 21वीं सदी की एग्रीकल्चर में। You are very happy that food security is there. Excess wheat may be there. Food security is there. But friends, if you want to be healthy, nutritional security is not there in this country at the moment. And that's why our Vice Chancellor said the diseases, the problems, so many things are coming up. Our Dean Life Sciences, he also told something regarding that. Soil is the raw material of life. That is to be taken care of. So these are the big challenges which we are going to face, but here we are concerned only with this. In the today's workshop, the time will come, we will come again and discuss with this. But you have to take care of all these 6 problems in the country if this agriculture is to be made successful. Next, please. छोड़ दीजिए इसको, just skip it. Not needed, skip it also. क्या आ रहा ठीक नहीं है. ज़रा बहुत मुश्किल कर दिया, सब खत्म हो गया, ज़्यादा और होगा तो बहुत ज़्यादा खत्म हो जाएगा, इसकी बात हम आपसे आगे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. नेक्स्ट प्लीज. You see friends, I would like to emphasize one thing for a moment. We are drawing one oil from the wells in Assam or the Bombay High, and everything of the fuel is coming out of there, the petrol, the diesel, the kerosene, the mobile oil, the naphtha, everything is coming out of there. Through a pipeline, it is coming to the refineries. Our farmers, if you say, this is the well of the petroleum well, you can say, this is the pipeline, and out of that we are fractionating everything for our life. But I'm sorry to say, when I asked the farmers कि ये जो रिफाइनरी है इसका मालिक कौन है, बिटरनेस के मिर्चा का मालिक, गन्ने की मिठास का मालिक, इतनी बड़ी सरसों का मालिक, इतने बड़े वाटरमेलन का मालिक, फैक्ट्री का मालिक वो है, उसको पता नहीं है कि ये कच्चा माल कहाँ से आ रहा है और ये कैसे बन रहा है. This I can tell you, being with the farmers, I can just challenge this 95 to 99% farmers, they don't know what is soil and how it is to be managed. We have done everything above the soil, and this is our fault also. हमारे जो फैकल्टी बैठे हैं उनके लिए क्षमा चाहिए कहेंगे. एक आदमी ने हमसे कहा, बहुत हमको डांटा, you have spoiled the whole atmosphere, you have spoiled the groundwater, even the people are going to the nursing homes, this is because of all the agriculture problems. और जब वसूल है मैं खाने का तेरे साकी, कि जाम उसको थमा दिया जिसको पीना नहीं आता. बोला कि आपने फर्टिलाइजर दिया, आपने पेस्टिसाइड दिया, आपने हाइब्रिड दिया, सब कुछ दिया, आई एग्री, लेकिन ऐसे आदमी को दिया, उसको बताया नहीं कि इसका प्रयोग कैसे करना है. दिस गोज टू आवर हेड, वेदर वी आर देयर आर द गवर्नमेंट एजेंसी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंशन. लेकिन अब आपको तो जो रिसर्च करोगे सीधे किसान के खेत में करना पड़ेगा. So this is intention of the government at the moment. मैंने उनको जवाब दिया, वो भी आपको बता दूं, लिख के उनको जवाब दिया. आपको खाना मिल रहा है, पेट भरा है, आपकी उम्र जो 36 साल से 65 साल, उसमें डॉक्टर भी बैठे थे, पत्रकार बैठे थे. जैसे एक घटना हुई थी हमारे साथ, ये बिल्कुल ट्रू घटना है, मेरी डायरी में लिखी हुई, और सबने हमको इतना हड़का दिया कि मैं चुपचाप सुनता रहा. इतना पोल्यूशन, अब हम समय नहीं बताने का आपको,
कितनी मोटरसाइकिलें, कितनी गाड़ियाँ, कितनी जहाज़ें, कितने सब उड़ रहे हैं। मैं स्टुटगार्ट में एक दिन बैठा था जर्मनी में, संडे के दिन 7 से 8 के बीच में 22 जहाज़ें उड़ी 1 घंटे में। वो पोल्यूशन कहाँ जा रहा है? हर घर में 4 मोटरसाइकिल, पोल्यूशन कहाँ? हमारे किसान तो उनको प्रणाम करो कि वो फोटोसिंथेसिस से आपके इस पोल्यूशन को दूर कर रहे हैं, और आप कहते हैं कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं। मैंने कहा ये तो हमारे मंदिर के पुजारी हैं जो सबको खाना खिला रहे हैं। और मैं गया, लिख के दिया, वो भी आपको बता दो, फिर आगे जरा थोड़ी बात और करूंगा। मैंने लिख के दिया, डूब के बैठ के मैं खाने में जिंदगी तबाह कर दी, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा। बैठ के डूब के मैं खाने में जिंदगी तबाह की, तब तो किसी ने कुछ न कहा। हम तो मंदिर से आके थक के बैठ के आ गए मैं खाने के पास कि हमारे घर और मोहल्ले में FIR कर दिया। तो ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आम पब्लिक को समझाने के लिए मुझे कहना पड़ता है। ये अगर एक्सटेंशन करना है तो हमको उसी रूप में इस विज्ञान को लेके जाना पड़ेगा। एनीवे, लिविंग टू दैट, नेक्स्ट प्लीज, बी क्विक। ये आप देख लीजिए, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है इसको। नेक्स्ट, ये कौन सा लगा दिया भाई? कहाँ गए वो? जरा सब पेन ड्राइव वाले कहाँ है? बताइए जरा। लाइफ सॉइल and then stomach of plants. This is Aristotle, Arastu ne kaha. This is stomach of plants. Then this is community, not a commodity. 2 चम्मच मिट्टी में 4 अरब जिंदगी है, इसको नोट करिए, 4 अरब। It's the base of agriculture, everybody knows it. And now this is the storehouse of the plant nutrients. Next, आप दे दीजिएगा तो लड़कों को मिल जाएगा। ये भी आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट, गो टू नेक्स्ट। दिस आई हैव आल्सो टोल्ड यू। नाउ कम टू हियर। इफ समबडी आस्क्स व्हाट इज सॉइल, फॉर यू इट्स जस्ट व्हेन एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर दे वर्क व्हील इन व्हील। दिस वाज द कांसेप्ट गिवन बाय अ साइंटिस्ट न्यूए। दिस इज वेरी गुड दैट इफ दिस lapse of time goes, this much of soil is formed. And to your information, 2.5 centimeter surface soil means 1 inch is formed. It will take about 1,000 years. 1,000 years. And what is happening to it, I will let you know. This is just concept. A natural body which is formed by the nature. This is the simplest definition. Otherwise, the scientific definition is with you. You all know it. Next, please. क्षितिजल पावक, अभी बात आई क्षितिजल पावक। एवरीथिंग इज देयर इन द सॉइल विद द एनवायरमेंट एंड सोलर एनर्जी, इट इज गिविंग एवरीथिंग टू यू। सो दिस इज टू बी टेकन केयर ऑफ फ्रेंड्स। द मेजर पोर्शन ऑफ लाइफ इज हियर। दिस इज टू बी टेकन केयर ऑफ बाय यू, कमिंग जनरेशन। नेक्स्ट प्लीज। You can, this scenario I have told you already. I have told you. Next, types of soils. If you take in totality, there are 12 order of soil in the whole world, 12. And I think it's about 7 or 8. 8 are existing in India. 8. 8 are existing in India alone. So that's why the 59 universities will and practices. And that's why these state universities are working. And I hope those who are from the different parts of the country, different states, they will have to take care of all this. Next, please. You are hearing about soil health, soil health. Somebody asked me, what is the parameter of soil health? The simple answer is that all the physical, chemical, biological